It's often said in Indian politics, battles are fought across the country, but the war is in Uttar Pradesh, always in Uttar Pradesh. And in its 80 Lok Sabha seats, there are a few seats that will always see the maximum action, the maximum casualties, the maximum political carpet bombing. These are the seats that take no hostages. It is always a do or die. And two of these seats, Amethi and Raebareli, राशन मिलता है यहाँ पर, आपको मिलता है। विश्वास था भाजपा पे, तभी तो मैम जीताए हैं हम लोग। इस बार लगता है राहुल गांधी आएंगे। हाँ, कहा तो आएंगे। अरे जीता तो यहाँ से हमेशा राहुल गांधी क्लियर। तुम्हारा वोटिंग कितना साल के हो? अभी नहीं हुआ। तो अभी हुआ नहीं है पर क्लियर है राहुल गांधी। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये जानवर का और विकास का। विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ, तो कोई विकास नहीं है। फिलहाल यहाँ युवाओं के लिए कुछ है नहीं जी। वैकेंसी आती है वो रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। अब की बदलाव चाहते हैं मैम हो जाए। थोड़ा नलका वलका ही दिक्कत है, पानी नहीं है। हाँ। कौन पार्टी पसंद है? कोई नहीं काम किया, कोई नहीं किया। कहाँ काम की नहीं शुरू से। सोनिया गांधी तो की नहीं, कुछ तो है कुछ नहीं करी, नहीं वो तो की नहीं, NTPC बनवा दी नहीं, कही थी इंदिरा गांधी वो तो सब कह के गई भाई। जब राहुल गांधी ने कोई यहाँ उनकी माता जी ने कोई काम नहीं किया रायबरेली में आके, तो आप किस आधार पे वोट मांगोगे आके यहाँ? राशन कार्ड आपका बना है? नहीं बना है, मतलब कुछ मिलता नहीं ना। 5 किलो राशन कहाँ तक का चले? सरकार से इसलिए खुश नहीं है कि मतलब कुछ कहे तो कम से कम कॉलोनी दिलाएं बच्चों को। कॉलोनी से हमारे गांव में इतनी कॉलोनी ही नहीं है कि आदमी लोग तो गरीबी है, लोग मरे जा रहे हैं। Both Amethi and Raebareli have now already voted. It's time for us to move on. As a journalist, the more miles you put in, you tend to get that more jaded. Stories that move you, stay with you, get fewer. But some will still break your heart, because their heartbreak in this electoral circus is deemed so insignificant. आपको जो लगे कि ये काम ठीक किया है, ये इस पे वोट होना चाहिए। हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप किसी को ही नहीं देंगे? क्यों? हम 5 साल 7 साल से परेशान है केवल एक राशन कार्ड के लिए। कोरोना से पहले और आज तक ना कांग्रेस बनवाया, ना अखिलेश और ना बीजेपी। ऊंचा हाट से साइकिल से हम लोग वोट डालने बीजेपी के लिए आए थे। अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं, 4 बार अप्लाई कर चुके लालगंज शांति नगर से, नहीं बना है। नहीं, इसलिए हम किसी को वोट नहीं देंगे। दादी इधर आओ, इधर आके बैठो। इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो दादी। बैठो। का बताई साहब? का दिक्कत? का दिक्कत देखो, टूटे फटे घर में 25 साल हुई गई रही। हमने को न कमाए वाला न धमाए वाला को, हमको कर दुनिया कॉलोनी बनी गई, हमको को नहीं कॉलोनी दी ना, नहीं दिया है। कहाँ दिया? वो देखो ईंटा लगाए रखे हैं धरे तो है ना, वो अनाथ गरीब बन का कतो। राशन मिल रहा है दादी? राशन पाई थे 10 किलो। 10 किलो पा रहे हैं। हाँ। पर अभी तक आवास का पैसा नहीं आया। किसी सरकार पे विश्वास है? अब साहब कौन विश्वास करे? अब जब 25 साल से घर में टूटे फटाए मान, तो कौन विश्वास करी कहीं का? अब अंधर आँखी पाओ तो पता लागे। 25 साल हो गए, पूछ लट वाला बत्ती थे, हमारा घर गिरा पड़ा, आदमी नहीं को कमाए वाला क्या करे? It's a time when terms like bastions have little relevance. But for old time's sake, from one Gandhi bastion to another. But the divide between these two runs deep. It's familial. It's bitter. From Raebareli to Sultanpur.
From Rahul Gandhi's seat to Menaka Gandhi's seat. From Congress to BJP. In midst of a deafening political campaign in neighbouring seats of Amethi and Raebareli, Menaka Gandhi is running a hyper-local, relatively quieter and a no VIP, no roadshow campaign. She's seeking her second term from Sultanpur, but as Member of Parliament, her 9th term. आपका पेंशन लग जाएगा, लेकिन आपका इलेक्शन के बाद हमारी प्रभारी पूरे क्षेत्र के सेवा का 5 साल से मैं देख रही हूँ सबकी मदद कर। It's been very unlike BJP Nukkad Sabha, if I can say. Very, very different, hyper-localized campaign is what she's running, where she's talking about ration cards, where she's talking about Awas, where she's, actually asking them if they have any local issues. And possibly that's the reason why she's seeking her 9th term as a member of parliament. But let's try and get in, a word from the people here. कहाँ से हैं आप? इसी यहीं से हैं। काम किए हैं नेताजी ने? नेताजी ने बहुत काम किया। यहाँ का जो कुछ विकास का काम था उन्होंने नेताजी ने सब किया है। उनके घर पर अतिक्रमण हुआ, सबकी मदद मैंने की। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से। काम करती हैं? हाँ, काम करते हैं। हाँ, काम बहुत किया है। बहुत किया। बहुत। जो भी है कि पब्लिक की सेवा करती है। मतलब इनके लिए वोट देंगे या बीजेपी के लिए वोट देंगे? इनके लिए देंगे। इनके लिए देंगे। बीजेपी का इतना फर्क नहीं? नहीं, इनका प्रभाव हमारे लिए ज्यादा। कोई आया कि अस्पताल में भर्ती होना, कोई पसंद है मैंने कहा। हाँ जी। क्या पसंद है? काम किए हैं यहाँ? हाँ, काम किए हैं। वोट बीजेपी के लिए जाएगा या इनके लिए जाएगा? रेहाना इन्हीं के लिए जाएगा। कहाँ से हैं? सदापुर से। पसंद है मेनका जी? जी। क्यों पसंद है? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या काम किए हैं? सब किए हैं, हम लोगों को जो दे रही है मिल रहा है, इसलिए पसंद है हम लोगों को। वोट कमल के लिए है या मेनका जी के लिए? इनके लिए भी। इनके लिए है। हाँ। रोड बनवाए, सबका आवास दिवाए। आवास मिल गया है? इन्होंने दिया है? इन्हीं को मिले प्रधान तक गाँव दें तब। तो वोट कमल के नाम है कि इनके नाम है? जे पर इनका ही निशान रहे वहीं पर रहे। जहाँ पर ये रहे वहीं पर रहेगा, हो जाए। हाँ, कोई भी पार्टी हो पर ना वोट इनका है। आप वहीं रहेंगे? हाँ, वहीं हम लोग रहेंगे। Menaka Gandhi seemingly popular in her constituency. The run-up to the elections wasn't devoid of controversy for her or her son Varun Gandhi. Varun was denied a ticket from Pilibhit by the BJP. Then there were rumours he was asked by the BJP to fight against Rahul Gandhi in Raebareli. Rumour has it, he turned it down. How's the campaign going, Ms. Gandhi? It's long. It's a long campaign. Is it hot? It's very hot, yes. How many villages have you covered till now? About 700. 700. Yeah. So, you're seeking your 9th term, second from the same constituency. Yeah. If you have to possibly advise those who are looking to replicate your record, yeah, what would you say? One is that never stop campaigning. I don't stop for a minute. All 5 years are treated as part of my duty, my election campaign. And that means actually getting down to the absolute village, to the poorest of the poor, and working for them and making a difference. If you can do that, you don't actually need to have national issues on your agenda. You don't need to use caste and religion and stuff. You can actually just do it. It's very different, to be honest, than what is a BJP Sabha rally. We haven't heard
the chants of Jai Shri Ram, we haven't heard Aurangzeb. You're seeming to run a hyper-local campaign where you're talking about ration cards, you're talking about Awas, you're talking about issues that bother the common folk. So is there an attempt to run a hyper-local campaign? No, I always do it. I've done it my whole life. I just think people are more interested in their own problems rather than making them frightened of problems that don't exist. So, yeah, I would much rather talk to them about, and the reason why I keep talking to them about the things that I've done is because then they get hope from it. Everybody wants somebody to help them. And so if I tell them, oh, I helped this person, I helped that person, and I helped this person, then they believe that I will help them as well. And it makes them feel better. But hope is an unkind word in politics. No, it's the only word that should be given if it's not a lie. Right. We don't tell lies at all in the campaign. We don't promise anything that we can't deliver. And if you come to my house in the mornings, you'll see it's absolutely crammed full with people who have problems, and we try and sort them out on the spot. And this is the training that I give the Vidhayaks, this is the training that I give the whole party in Sultanpur. And they know that I just will not tolerate any form of casteism or religious. Yeah. You don't tolerate that? No, I don't. How do you stay away from it? It is one of the pole planks of your party. I know, but it doesn't affect anybody here. If you talk to anybody from the BJP, they're not about to talk about religion. They're not allowed? They're not about. But they know what works. In your constituency? Yeah. And you can you can replicate this in every constituency. And therefore, winning elections will be much easier. Everybody who does the other thing is now dependent on other people's glamour, other people coming in. Now in Pilibhit and here and Amla and wherever I've been sent, we never get VIPs coming in. Is the fact that, I was here in 2019 as well in your campaign, and I interviewed then, and that's a question I'd asked you and I continue to ask you, which you've answered, which is there are no VIPs, there are no these massive rallies, there is no Amit Shah road show, there is no road show. No. You don't do road shows. This is a road show. I mean, getting from one village to another is a road show. Therefore, that's why I ask you how difficult is it to survive in a political outfit which is completely contradictory to how you run your campaign? It's not difficult. I don't think anybody expects me to be anybody other than myself. I take issues that interest me. I do things that I believe India needs. And since I don't get in anybody else's way, and I don't criticize anybody else, nor do I make national statements, I think I'm just left to do what I do. There is, we've picked up this word Ma. There's this matriarchal figure, that at least the respect that you command. It's a huge responsibility, do you reckon, with that? It is. But the word would not have stuck. It would have just become a slogan. And it wouldn't have stuck if we hadn't worked for that. Everybody, when they come for help, we have, I think they spread the word. And so I have people even older than me calling me Ma. In fact, sometimes I tell the party people that during the election, you need to tell people my name because I don't want them looking for Mataji on the ballot paper. A lot of people don't, I'm sure they don't even know my name. The local issues in your constituency, one of those issues is stray cattle. And they've constantly spoken of it. It's a little contradictory because you've also animal rights champion. It's right at the back of your car we just saw. How do you propose one can deal with a crisis? It's a crisis in your state. You can't. You can deal with it by opening gaushalas. But the only way to deal with it basically is to stop dairies. Dairies and people who create, we give money to people to start dairies. On an average, about 200 cows are thrown out every day in Sultanpur. Now, how many gaushalas can I build? We have good gaushalas and I look after them. But how many can we build? So it's people create this problem themselves. Election after election. Are you happy
with the political party you're in, with the BJP? Yeah. Largely or Yeah. completely? Yeah. Let's just say I'm Leave it happy at with that. my own work. You're happy with your own work? I wish I could do more of it. And I look for different ways in which to help more people and animals. You know, a couple of questions which are difficult, but I would ask them. And Sure. one of them is the narrative of Mangal Sutra, which your leader. मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? The narrative of Zada Bachche, all of that. What is Zada Bachche? I haven't actually heard You haven't this. heard? No. You've heard the Mangal Sutra one? Or the narrative of we'll steal your buffaloes? No. Or somebody will. Somebody No. will. No. All of that doesn't stick for you. See, the thing is, I'm very, very tunnel visioned. Things I can't deal with, why should I even comment on them? However, I do want to say that perhaps Mr. Petroda was less than responsible in making a statement that could have been picked up by advocating the inheritance tax at this time. Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. Personally, I'm totally against the inheritance tax. I believe that in this country, people work less for themselves and more for their children. And then if they die and a certain amount of money is taken away, it is disheartening. Congress never said that they agreed with. No, Mr. I'm not Petroda. saying that. Right. I'm saying Mr. Petroda. I didn't say Right. Congress. I said Mr. Petroda, sitting in America, was less than responsible. Right. So they and gave then, the and party then you open elbow this room. window, Okay, and then everybody can shove their arm through it. I got it. You made that very clear that as a leader, you don't want to get into communal politics or politics of polarization. Do you and your son chat about politics? Very rarely. We all have so many interests. Right. Books, art, literature. My daughter-in-law is a wonderful graphic artist, and she does illustrations for books. So we have an amazing granddaughter who's 9 years old. There's so many, and she's interested in trees and animals. I run 30 hospitals and orphanages. So we all have our hands full. So you have your hands full. And there are lots of things to talk about, which are... But were you disappointed that he didn't get the ticket for Pilibhit? As a mother? Of course I was. Was he disappointed? I'm sure he was. The thing was that he these things happen. Would you shed some light on it? Did he refuse to fight Rai Bareli from the BJP? I really, really am out of it. I promise you. We did not discuss it at all. He's old enough to take his own decisions. And I don't think he would take any that would be less than elegant. Do you wish the Gandhis well in Rai Bareli? You have Rahul Gandhi who's fighting, he's trying to come back to UP. I wish everybody well during the elections. Seriously. I know how tough it is for everybody. It's everybody wants to get into politics without even understanding that it is the toughest business and full of dashed hopes, full of fear. So I wish really everybody well. Are you looking to fight another term? You're seeking your ninth. Will you seek a 10th? Who knows? It would be fun though. On the We'll same leave a ticket? benchmark. BJP, or it could be anything? Beta, who knows? Has anybody seen tomorrow? No. But I wish you So luck. then, And thank you for giving us the time. Thank you, ma'am. Thank you, Appreciate Beta. it. Menaka Gandhi challenged in Sultanpur by Samajwadi Party's Ram Bhual Nishad, a former minister in the BSP government, and the BSP's Uday Raj Verma.
Samajwadi Party, which has never won this seat, is banking on support from Muslims, Yadavs, Nishads, and a section of Dalits and OBCs to sail through. Back in the main city of Sultanpur, electoral opinion is rife. कब से है यहाँ पर? यहाँ पर तो मैं अभी इस टाइम मैं 2 घंटे से हूँ। नहीं जन्म से है। जन्म से। यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? वर्तमान में जो है बहुत गड़बड़ चल रही है। क्यों? महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध इस समय बहुत बढ़ गया है प्रदेश में। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। इस सरकार की तानाशाही से आजिज हो गए हैं। हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो बदलाव चाहते हैं? जी। जो यहाँ पे सांसद हैं उनको लोग वीआईपी समझ के वोट दिए थे, लेकिन कुछ जो उम्मीदें थी वो हो नहीं पाई, इसलिए यहाँ की जनता जो है इस बार परिवर्तन चाहती है। ये चुनाव जो है, अगर आप चुनाव के संबंध में पूछ रही हैं तो चुनाव जो है बदलाव के लिए है। चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इनको दूर करने का। कैंडिडेट मान्यता नहीं रखता। अब ये कैंडिडेट देखिए, हम लोगों ने 2019 में कैंडिडेचर ही देख के जिताया था। 9 बार की सांसद, पूर्व मंत्री केंद्रीय रह चुकी, जिस तरीके से उपेक्षा उनकी की है इस सरकार ने, तो अब की बार ये सुल्तानपुर की जनता माननीय मोदी जी की उपेक्षा करने जा रही। मेनका जी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये चल रहा है। ये है आपके घर। सबसे बड़ी बात की इनकी जो कहते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हमें लगता है कि इंजन ही इंजन है, डिब्बे नहीं है। 10 साल से सुल्तानपुर शहर में एंट्री के लिए 2 पुल थे, दोनों जर्जर हैं। एक 5 महीने में 6 बार टूट चुका, लेकिन 10 साल माँ बेटे यहाँ सांसद रहे, किसी ने आधारशिला दूसरे तीसरे पुल की नहीं रखी। बदलाव चाह रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 5 साल में जो विकास किया है 4000 करोड़ रुपए का, उसमें कहीं पूरा जिला में कोई नहीं बचा है। मेडिकल कॉलेज बनाया है, नवोदय विद्यालय बनाया है, IIT कॉलेज खोला है, पॉलिटेक्निक खोला है। उन्होंने कितना काम किया है कि उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। हम लोग इस बार बदलाव केंद्र का चाहते हैं, प्रत्याशी हम नहीं देखेंगे। हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, धराशायी करना है। यहाँ की राजनीति एकदम गरमाई हुई है। मेनका जी कम से कम 2 लाख से हारेंगे। आपको लगता है वो जिता रहे हैं? नहीं 2 लाख से हार जाएंगे। मेनका जी एक ऐसी प्रत्याशी है, हमारे घर के नहीं, हमारी रिश्तेदार हैं। एक सच्चाई ये है कि चाहे उनके साथ 24 घंटा काम करने वाला व्यक्ति है जो वो अगर जाए, मैं अगर उनके साथ हूँ, अगर हमारी उनकी लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेके हो गई है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर वो सही है तो उनके वो बचाएंगे। तो आपको लग रहा है उन्हें वापस? बिल्कुल आप वापस बन जाए, बिल्कुल, उसमें कोई 2 राय बिल्कुल नहीं है। सुल्तानपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। आपको परिवर्तन? हाँ। और क्यों परिवर्तन चाहिए? बेरोजगारी चरम पे है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। बहुत गाली क्यों बने? But it is election season. Political opinion is something you can't get away from. And in Uttar Pradesh, it weighs the heaviest.